Hello children, how are you all? I hope you are fit and fine. Children, as you all know, this is your English video class and we are learning English Reader and we are completing the work of English Reader. Okay, so children, today you just take out your English Reader book, page number 107. This is a poem number 5, Daisies. Okay. So children, please take out your English Reader book, page number 107, poem number 5, Daisies. Okay. So before we are going to recite this poem, have you ever seen pretty daisies? Children, daisies is a beautiful flower. Daisy is a beautiful flower and it's having white petals. Okay, and you can see in this poem Frank Dempster Sherman has described very well, and he compared daisies with the stars, twinkling stars in the night. So children, this is a beautiful poem. Let's recite the poem. So children, I'm going to recite the poem. At evening, when I go to bed, I see the stars shine overhead. They are little daisies white that dot the meadows of the night. And often, when I'm dreaming so, across the sky the moon will go. It is a lady, sweet and fair, who comes to gather daisies there. For when at morning I arise, there's not a star left in the skies. She has picked them all and drop them down into the meadows of the town. Children, this is a beautiful description of daisies. And now here, children, the poet compared stars like daisies. So children, the poet name is Frank Dempster Sherman. Frank Dempster Sherman. Okay, Sherman. Okay, children. Frank Dempster Sherman, very famous poet, and he described very well. Now, children, I am going to write few new words. Actually, word meaning is most important over here. So we will write first of all new words and word meaning, or you can say wow words first we will write and then new words. Okay, so write down wow words. Wow words of this poem. First is overhead. Overhead. Second is meadows. Meadows. Third is fair. Fourth is gather. Fifth is arise. Okay, so there are 5 wow words. Okay, first is overhead, second is meadows, third is fair, fourth is gather, and fifth is arise. Okay, children, so write down wow words first, then new words. Okay, or word meanings, then new words. Okay, children, new words. Now
Our first new word is overhead. Overhead. The meaning of overhead is above. Okay, children? The meaning of overhead is above. Above. Now, second word is lichens. Lichens. The meaning of lichens is compares. Compares. Now, third number is meadows. Meadows. Meadows means fields. Okay, full of grass. They are called meadows. Field. Okay, children, write down fields. 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 Now, number 4 is fair. Fair means beautiful. Fair means beautiful. And fifth number is gather. Gather. It means collect. Something we are just gathering or collecting something, that is called gather. Ikhatta karna. So this is collect. Collect. Now sixth number is arise. Sixth number is arise, wake up. Arise means wake up. This is the first form of arose. Arise, arose, arisen. So this is the first form of arose. Okay. This is arise. Arise means wake up. Now children, here children you can see overhead. It means above, ऊपर. ठीक है, above. मतलब surface से ऊपर. That is called above. Now lichens. Lichens means compare करना. Compare. Comparison. Okay. Meadows. Meadows is the field with full of grass. Greenery से भरी हुई जो चीजें होती. That is called meadows. That field is called meadows. Now fair. Fair means beautiful. Okay. Now gather. Gather means इकट्ठा करना, gather करना, collect करना. Now arise means wake up, उठ जाना. Okay. So children, complete these wow words and new words over here. So complete it. Take a screenshot. Now after that, I am going to explain the poem. Okay children. So we will start from first stanza. At evening when I go to bed, I see the stars shine overhead. They are the little daisies white that dot the meadows of the night. Now children, here you can see, at evening when I go to bed. We are all going to bed in the evening. After taking our dinner, we used to go to bed and go to sleep. Now, Frank Dempster Sherman explaining himself, okay, himself when maybe in the childhood he used to see these type of the things in the sky. So he said, at evening when I go to bed, जब मैं रात को सोने के लिए अपनी बेड पर जाता हूँ, I see the stars shine overhead. मैं क्या देखता हूँ? What I used to see stars twinkling in the sky overhead. सर के ऊपर यानी ऊपर की तरफ यानी in the sky there is twinkling of stars. They are little daisies white. Now यहाँ पर फ्रैंक डेम्स्टर शॉर्मन कंपेयर करते हैं डेजीज को. डेजीज जो कि वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं एंड दे आर द ब्यूटिफुल फ्लावर्स, और उसका कंपैरिजन वो करते हैं स्टार्स से. दे आर लुकिंग लाइक डेजीज. वो डेजीज की तरह ब्यूटिफुल वाइट कलर के हैं. दैट डॉट द मीडोज ऑफ द नाइट. जो कि मीडोज में, जो कि घास के मैदानों में जैसे कि वाइट वाइट डॉट से लगे हों. डॉट मतलब चिन्ह यानी एक सर्कल्स, छोटे छोटे सर्कल्स. तो दैट डॉट लुकिंग लाइक डॉट, जस्ट लुकिंग लाइक दिस डॉट्स. ओके, सो डॉट्स की तरह वो दिखाई देते हैं इन द फील्ड, इन द मीडोज. जैसे घास में डेजी दिखाई देती है वाइट वाइट डॉट की तरह, वैसे ही स्काई में वाइट वाइट ट्विंकलिंग
स्टार्स से, फ्लावर्स से वो दिखाई देते हैं, स्टार्स. ओके. सो एंड ऑफन व्हेन आई एम ड्रीमिंग सो, जब मैं अक्सर सपने देखता हूँ, across the sky the moon will go. Now in his imagination what he saw the moon as a fair beautiful lady. मून को वो यहाँ पर देखते हैं अपने ड्रीम में, अपने सपने में, कि वो एक सुंदर ब्यूटीफुल लेडी है. और across the sky the moon will go, इस तरफ से उस तरफ मून चलता रहता है. will go, वो जाएगा. Now it is a lady sweet and fair. ये एक लेडी है, एक सुंदर सी लेडी है, एक ब्यूटीफुल लेडी है, एक ब्यूटीफुल लेडी है जो कि बहुत ही स्वीट है, वेरी स्वीट एंड फेयर. हु कम्स टू गैदर डेजीज देयर, जो कि आती है डेजीज को कलेक्ट करने के लिए. ओके. सो यहाँ पर स्काई इज लुकिंग लाइक अ मीडो, ओके, लाइक अ ग्रासलैंड and like a green grassland or field. And here the Frank Dempster Sherman is comparing stars like a daisies and moon like a beautiful lady. Now 3 personification you can see over here. So this poem is full of personification. Personification means यहाँ पर किसी भी ऐसी यूनिवर्सल और सेलेस्टियल बॉडी को एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करना. सो दिस इज कॉल्ड पर्सनिफिकेशन. नाउ चिल्ड्रन, हु कम्स टू गैदर डेजीज देयर, वो वहाँ आती है, डेजीज को कलेक्ट करती है. फॉर व्हेन एट मॉर्निंग आई अराइज, जब सुबह होती है और मैं जब उठता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, तो व्हाट आई सी, देयर इज नॉट अ स्टार लेफ्ट इन द स्काई, और मैं देखता हूँ कि आसमान में, स्काई में कोई भी स्टार बचा हुआ नहीं है. शी इज पिक देम ऑल, दैट फेयर लेडी पिक देम ऑल, वो सारे स्टार्स को पिक कर लेती है, सारे डेजीज को पिक कर लेती है. एंड ड्रॉप देम डाउन, और उनको नीचे फेंक देती है. ड्रॉप देम डाउन मतलब नीचे फेंक देती है इनटू द मीडोज ऑफ द टाउन. वो स्टार्स को पिक करती है पूरी रात. सुबह जब मैं उठता हूँ, देयर इज नो एनी स्काई, एंड व्हेन आई वेक अप आई यूज्ड टू सी द डेजीज इन द ग्राउंड, और तब मैं देखता हूँ कि डेजीज जो हैं वो मीडोज में पड़े हुए हैं. वो स्टार्स डेजीज की तरह खिलकर मीडोज में पड़े हुए हैं. सो दिस इज द ब्यूटिफुल स्टोरी. Now children, in short, I would like to tell you that this is the imagination of and the dream of a boy, and he is dreaming that the sky is looking like a meadows and the stars looking like a daisies. Okay, and the fair lady comes and वो क्या करती है, वो सारे स्टार्स को कलेक्ट करती है और उनको नीचे ड्रॉप डाउन ऑन द अर्थ पर वो फेंक देती है. जब फेंकती है तो वो डेजीज बन के नीचे खिल जाते हैं. यानी कि यहाँ पर द पोइट इज कंपेयरिंग दैट स्टार्स लाइक अ डेजीज, मतलब स्टार्स जो है वही डेजीज हैं और डेजीज जो है वही स्टार्स हैं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. So children, this is the beautiful poem composed by Frank Dempster Sherman. So always remember Frank Dempster Sherman. Okay. So children, we have completed this. Now we will do comprehension first. Okay. So let's do it. Comprehension. In comprehension, after the explanation of this poem, we will do comprehension. हम comprehension करेंगे इसमें, और हम इसमें क्या करेंगे देखिए, choose the correct option to answer the following question. तो हमें choose करना है, choose the correct options. Okay, so this is
हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शंस को. द फर्स्ट क्वेश्चन इज what has the poet compared the stars at night. Now children, here it is written, what has the poet compared the stars at night? वो किससे कंपेयर कर रहे हैं स्टार्स को? तो अगर आप देखेंगे द ऑप्शंस फ्रेश वेजिटेबल्स, लिटिल वाइट डेजीज, जूसी एप्पल्स and D, large and green fields. No children, this is the B. The answer is B. Answer is B, little white daisies. Little white daisies. Little white daisies. This is the answer. So complete this, children. Little white daisies. Now second number, according to the poet, what is the night sky like? What is the night sky like? ओके. रात में स्काई कैसा दिखता है? रात में स्काई कैसा दिखता है? ठीक है, ये है क्वेश्चन. नाउ द ऑप्शंस हैं आपके पास, अ पॉन्ड, अ रेलवे प्लेटफॉर्म, अ मीडो, अ व्हीकल. यस ऑफ कोर्स चिल्ड्रन, दिस इज मीडो. नाउ अगेन आवर सी नंबर is correct. A meadows. Looking like a meadow. Okay. So write down a meadow. Okay children. Now here third number question. What does the poet do at night? Poet रात में क्या करता है? What does the poet do at night? पोएट रात में क्या करता है? ओके, सो आंसर वी विल राइट डांस, सिंग, वॉक, स्लीप एंड ड्रीम. यस चिल्ड्रन, पोएट रात में क्या करते हैं? पोएट रात में स्लीप एंड ड्रीम. इट मीन्स डी इज करेक्ट ऑप्शन. डी सही है. स्लीप एंड ड्रीम. क्या करते हैं? स्लीप एंड ड्रीम. सो चिल्ड्रन, write down the correct answers. First, little white daisies. Second, a meadow. And third number, sleep and dream. Okay children? So complete this. Now we will do our next question, that is number 4. Number 4 is what cannot be seen in the sky in the morning. In the morning. Okay. So what cannot be seen in the sky in the morning? क्या सुबह नहीं दिखाई देता? Okay. तो सुबह क्या नहीं दिखाई देता? This is option is C. Answer number C is correct. The stars. The stars children. सुबह क्या नहीं दिखाई देते?
स्टार्स नहीं दिखाई देते, द स्टार्स. ओके, सो आंसर डी सी इज करेक्ट, द स्टार्स. ओके चिल्ड्रन, complete this children. Now children, we will do our next part, that is B. Take a screenshot. Now we will do B. Now children, start writing comprehension B. Comprehension B we are going to start. Okay, now complete the blanks. Complete the blanks using suitable words from the poem. Words from the poem. ठीक है, अब इसमें आपको suitable words को poem के लिखना है. The poet sees the star in the night before going to bed. The poet sees the stars in the sky before going to bed. Before going to bed. ठीक है. Now second number is the poet compares the stars in the skies with the daisies in the meadows. ओके, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? डेजीज को कंपेयर कर रहे हैं स्टार्स से. नाउ थर्ड नंबर इज द पोएट imagines the moon to be a who is sweet and fair. To be a, अभी आप to be a किससे कंपेयर करते हैं मून को? To be a lady. To be a lady who is sweet and fair. Who is sweet and fair. Who is sweet and fair. ठीक है, कंपेयर किससे करते हैं? लेडीज से. Who is sweet and fair. Now B number comprehension we have completed children. Okay, completed. In first blanks you will write stars. In second blank you will write daisies, and the third blank you will write lady and fair. Okay, so complete this B number, take a screenshot, and after that we will write literary appreciation. Find the 6 different pairs of rhyming words from the poem. So we will find out the rhyming words from the poem, then we will write. Now children, our next exercise is literary appreciation. Now find the 6 pairs. So we have to write 6 pairs. We have to 6 pairs of rhyming
of rhyming words from the poem. ठीक है, राइमिंग वर्ड्स को हमें पोएम में देखना है, तो हम लोग लिखेंगे. नाउ फर्स्ट इज बेड, सो द राइमिंग वर्ड इज ओवरहेड. ओवरहेड. ओके. नाउ सेकेंड इज वाइट, so the rhyming word is night. Okay. Now number 3 is so, so here go. Number 4 is fair, so here there. Number 5 is arise, so here skies. Okay children, now number 6 is down, so this is town. Okay, so now children completed. Now this is bed, overhead, white, night, so go, fair, there, arise, skies, down and town. And if you can find more than these words, you can also write down. So children, now this chapter is completed now. Okay, this poem is completed now. So we will do in our next video letter writing and story writing. Okay, so children, we will meet again in our next video. Till then, bye bye and take care of yourself.